So students, today we are going to begin with the topic decimals. So first let us see the Indian system of numeration over here. We know that this is a place value chart in Indian system of numeration, and it have the places ones, tens, hundreds and thousands. Now we have studied that in Indian system of numeration, whenever we move towards the left hand side, okay, then its value गेट्स इंक्रीज 10 टाइम्स. दैट मीन्स अगर हम 1 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नेक्स्ट प्लेस मिलेगा. सिमिलरली इफ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 10 बाय 10 देन वी आर गोइंग टू गेट हाउ मच 100. सिमिलरली अगर हम 100 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे देन वी आर गोइंग टू गेट 1000. तो जब हम लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं इन द लेफ्ट हैंड डायरेक्शन देन वी मल्टीप्लाई द नंबर्स. नाउ if I want to move in the right hand side direction, then what I will do, if I divide 1000 by 10 then I will get 100, and if I divide 100 by 10 then I will get tens, and if I divide 10 by 10 then I am going to get 1. Okay, so moving in this direction we will extend our place value in the left direction. But what about this? If we are dividing the numbers, then what should come over here? So here we are going to now study a new place value system of decimals. Okay, so if I divide 1 by 10 then I am going to get what? अगर मैंने 1 को 10 से डिवाइड किया, दिस इज द फ्रैक्शन दैट वी हैव स्टडीड द नंबर्स ना, दैट इट कैन बी रिटन एज फ्रैक्शन 1 डिवाइडेड बाय 10 और 1 बाय 10. आई कैन राइट इट लाइक दिस. सो दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी रिटन एज 1 अपॉन 10. तो यहाँ पे अगर मैं इसका फर्दर डिवीजन करती हूँ 1 को 10 से फर्दर डिवाइड करती हूँ इस तरफ मूव करने पर, सो आई विल गेट 1 अपॉन 10. सिमिलरली I will make one more column, then I am going to divide this 1 upon 10 by 10 again. Okay, so here I have divided this 1 upon 10 by 10 again. So what I will get on dividing 1 upon 10 by 10? I divide 1 upon 10 by 10, I am going to get 1 upon 100. Okay, so this will be 1 upon 100. Now similarly, if I will divide this 1 upon 100, then here the place value will be 1 upon 1000, and this is written as tenths. We call this place as tenths because 1 upon 10 can be read as 1/10 or tenths. This will be read as hundreds. Here student, on dividing continuously by 10 we will extend this place value system towards the right hand side direction also, and this extension will be in the fraction form. Okay, 1 upon 10, 1 upon 100, 1 upon thousands and so on, and we read this place at tenths place, hundredth place, thousandth place. Okay, THS एंड में यहाँ पे सभी में लगेगा. So now this is which part? We can consider this as whole number part, and this is the fractional part of the place value system. So students, here if we wish to move towards the right beyond 1 places, अगर हम 1 places के beyond move करते हैं, we will have to extend the place value table by introducing the places of tens, hundreds, thousands और 10,000s एंड सो ऑन. तो यहाँ पे जब हम राइट में मूव करते हैं हमारी प्लेस वैल्यू भी एक्सटेंड हो जाती है और न्यू प्लेस वैल्यू चार्ट हमारा बनता है. ओके, सो स्टूडेंट्स, एज वी ऑल नो दैट वेन एवर वी राइट अ नंबर इन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, सो हाउ डू वी राइट द नंबर? लाइक सपोज आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल 235. सो 235 वी नो द प्लेसेस दैट दिस इज वंस, दिस इज टेंस एंड दिस इज 100 places. But if a fractional part comes and we have to write that fractional part also along with it, then how we are going to write it? Okay, then for writing that number we will place a point over here, and then we are going to write the numbers in the fractional part over. All know that 1 upon 10, 1 upon 100, 1 upon 1000 and so on are
fractions. So these will be known as decimal fractions. Okay, 1 upon 10, 1 upon 100, 1 upon thousands are known as decimal fractions. So students, 1 upon 10 will be written as 0.1. ओके 0.1. तो ये जो पार्ट है, हम दो पार्ट्स देखेंगे यहाँ पे. एक पार्ट ये हो जाएगा इस तरफ वाला और एक इस तरफ वाला पार्ट हो जाएगा. ये जो पार्ट है ऑन द राइट हैंड साइड, ये पार्ट डेसिमल पार्ट कहलाएगा. एंड दिस पार्ट विल बी नोन एज होल नंबर पार्ट और इंटीग्रल पार्ट. इधर वाला जो है LHS वाला पार्ट जो कहलाएगा, दैट विल बी आवर होल नंबर पार्ट. ओके, लेकिन ये जो डॉट है, ये जो पॉइंट है, इसके बाद जो पार्ट आएगा ऑन द राइट हैंड साइड, दैट पार्ट विल बी नोन एज डेसिमल पार्ट. नाउ वी विल राइट दिस डेसिमल फ्रैक्शन ओवर हियर इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स आफ्टर द point. So if I want to write 1 upon 10, so it will be written as 0.1, and 1 upon 100 will be written as 0.01, and similarly 1 upon 1000 will be written as 0.001. Now let me write over here some numbers. Suppose I am writing 05 over here. If I want to write 05 after the decimal, then this number will be 0 will lie at 10th place and 5 will lie at 100th place. Okay, so here we have to read the place values like this. Okay, let us take some fractions. Okay, like I am taking over here 3 upon 10 and 29 upon 10 and 653 upon 100. Okay, so how I am going to write these fractions in the decimal form? Okay, so first I will put a point over here, then I will see the place. 3 upon 10 will lie at 10th place, so I will write directly 3 over here because this is the 10th place. Okay, now I can't leave point 3 as it is, so I will have to put 0 over here at the whole number part or the integral part, and 0 does not make any sense. We are putting the 0 so that we can easily recognize it. I want to write 29 upon 10, so first I am going to write the number, and from here I will start the place because I have to mark the point over here. I don't know that where I should put the point, so here 10th place is given, so we will start from here. This will be our 10th place. Okay, so as we all know that 10 is written over here and it lies at 10th place, so 9 will come at 10th place, so we will put the point over here, and 2 will go at 1's place. Okay, so it will become 2.9. Similarly if you are going to write 653, तो बेटा यहाँ पे आप एक चीज़ और कर सकते हो, जितनी ज़ीरो होती हैं, ओके जितनी भी 0, 10 या 100 में होती हैं, तो हमें क्या करना है, हमें कोई भी नंबर लिखना है और हमें इस तरफ से फ्रॉम द राइट हैंड साइड हम इस तरफ से देखेंगे नंबर को. अगर 1 0 बैकवर्ड वी हैव टू टेक द 1 नंबर एंड वी विल पुट द पॉइंट इन फ्रंट ऑफ दैट नंबर, सो इट विल बिकम 2.9. Okay, similarly if you are going to write 653 in decimal form, so how you are going to write? You will first write the number, then since there are 2 zeros, that so you will count the numbers 1 and 2 and you are going to put the point in front of these numbers, so it will become 6.53. We will read it as 6.53. ओके, डेसिमल के बाद अगर आप पॉइंट में पढ़ रहे हो तो आपको 53 नहीं पढ़ना है, 53 पढ़ा जाता है हमेशा. और यू कैन रीड इट एज इफ यू आर रीडिंग अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू, सो 6 and 53 hundreds. So 53 is lying at which place? You can see over here, this is our 10th place and this is our 100th place. So 53 is at 100th place, so we will write at 6 and 53 hundreds. Usually you are going to read the decimals in this form, 6.53, or if I am writing the decimal like this, 25.013,
8. सो आई विल रीड इट एज 25 हमें एज इट इज़ रीड करना है 0.018. इसे 18 रीड नहीं करेंगे, 018 करेंगे. डेसिमल के बाद बेटा अगर कोई ज़ीरो लगी होती है इट हैव सम सेंस. डोंट थिंक कि हम इसको 25.18 लिख सकते हैं. 25.18 विल बी डिफरेंट देन 25.018. तो डेसिमल के बाद जितने भी नंबर आते हैं दैट हैव इधर ज़ीरो भी है तो वो उसमें उसकी वैल्यू होती है. अगर आप इसके बाद कोई ज़ीरो लगाते हो सो इट विल नॉट हैव वैल्यू, बट इसके पहले जो डेसिमल के जस्ट बाद जो भी चीज़ आएगी उसकी वैल्यू हमेशा होगी. वी हैव सीन हाउ टू राइट द फ्रैक्शंस इन द डेसिमल फॉर्म विथ पॉइंट. सो दीज आर नोन एज डेसिमल्स. ओके, वी कॉल दैम एज डेसिमल नंबर और सिंपली वी कैन कॉल दैम एज डेसिमल्स. तो डेसिमल्स में यूजुअली पॉइंट के बाद के नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है एंड दे आर नोन एज डेसिमल्स. So students, here I am having some fractions. So how I am going to represent these fractions in decimal form? So see over here 2 is a whole number. So 2 will be written as it is. Now 1 upon 10 is the fractional part. So we will put 1 upon 10 can be represented in the decimal form because in decimal form we always, this is the place value system of decimal form. So we will put point over here after the whole and 1 upon 10 will be written as there is 1 0, so directly we can write the numerator 1 as it is. तो यहाँ पे बेटा हमें न्यूमरेटर को लिखना पड़ता है आफ्टर द डेसिमल एंड इट विल बी रीड एज 2.1. होल नंबर पॉइंट के पहले आएगा एंड पॉइंट के बाद में जो फ्रैक्शनल पार्ट है या डेसिमल पार्ट है वो आता है. नाउ इफ यू वांट टू राइट 6 17 upon 100, so how you are going to write it? So 6 is a whole number, it will be written as it is, then we will put a point and since there are two zeros, so in the numerator we can write and in the numerator also there are two digits, तो यहाँ पे हम 2 digits लिख सकते हैं. Let us see how to write the expanded form of the decimal numbers. You all know very well that this is the whole number part or the integral part and this one is known as the decimal part. तो यहाँ पे जो decimal part की place values होंगी वो डेसिमल पार्ट के अकॉर्डिंग होंगी एंड होल नंबर्स की प्लेस वैल्यू हमने जो होल नंबर्स की प्लेस वैल्यू सिस्टम पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हमें इसको करना होगा. सो इसको अगर हमें एक्सपांड करना है 172 को, सो हाउ वी आर गोइंग टू एक्सपांड? फर्स्ट वी विल मार्क द प्लेस वैल्यूज. ओके, सो होल नंबर पार्ट की प्लेस वैल्यू मार्क करने के लिए वंस, टेंस and this is hundreds place. Now we are going to write the place values of the decimal part. As a tenths place, this is hundreds place, so H, and this is thousands place, so it will be written as TH, small th. Now we are going to expand as we do the expansion. So whole number part का expansion कैसे होगा? This is at hundreds place, so it will be written as 1 into 100 equals to 100. Okay, and now this is at which place? This is at tens place, so it will be written as 7 into 10 equals to 70. So here we are writing the place value. Place value of 2 is what? 2 into 1, that is 2. Okay, and place value of 9 is at 10th place. So how do we write it? We will write it 9 into 10th means 1 upon 10th. Okay, so it will be 9 upon 10 and 8 is at hundredths place, so 8 into hundreds is written as 1 upon 100, so it will be written as 8 into 1 is 8 upon 100. Similarly 7 into 7 is at thousands place, so 1000 and it will be written as 7 upon thousands. Now we are going to write the expanded form. So the expanded form of 172.987 is 172 can be expanded as 100 plus 70 plus 2. Then we are going to add
Okay, we will not put this decimal. So here we will write the fractional part. Plus 9 upon 10 will be written as 9 upon 10, and 8 is at hundredths place, so 8 upon 100, and it will be written as 7 upon 1000. So this will be the expanded form of 172.987.